So we started with the Euler function phi. So phi of 1 is 1, right? And in general, phi of m is number of positive integers less than m which are prime to m. Right. So we have seen if my number p is prime, so we have seen one result that p is prime if and only if phi of p is equal to p minus 1. So prime p के लिए हमें पता लग गया phi of p is p minus 1. Right. So as discussed, we will try to find the formulas for the remaining numbers, whether it is composite or the other sense. Right. So in this direction, so हमने phi of p का तो देख लिया. Now the question is, what if I have some power of p? What if I have some power of p? Right? Say, so what will be phi of 13? I'm sorry. What is phi of 13? Phi of 13 कितना होगा? कितना होगा बेटा? What is phi of any prime number p? P minus 1. P minus 1. P minus 1. So therefore phi of 13 will be 12. Now the question is why? What is phi of 13 square? What is phi of 13 cube? So in general, what is phi of p raised to power k? अब देखो, let us find the formula for phi of p raised to power any number k. Now you see, हमें पता है कि we know that कि अगर मेरे पास k is 1 है, then I know if k is 1, then this is nothing but phi of p because k is 1 and phi of p is nothing but p minus 1. अब अगर मैं देखूं p raised to power k तक, now from कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 p, राइट? फिर उसके बाद p plus 1 आएगा, p plus 2 आएगा एंड सो ऑन, p स्क्वायर आ जाएगा. फिर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 2 एंड सो ऑन, p क्यूब. ऐसे लास्ट तक चलते जाएंगे. वी विल हैव व्हाट? p रेज टू पावर k minus 1 plus 1, p रेज टू पावर k minus 1 plus 2 एंड सो ऑन. लास्ट में क्या होगा? p रेज टू पावर k. अब मुझे ये बताओ, इनमें से कौन कौन से नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स हैं जो p रेज टू पावर k से प्राइम होंगे? इन सारे नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स हैं जो p रेज टू पावर k से प्राइम? चलो ये बताओ जो p रेज टू पावर k से प्राइम नहीं होंगे, जिनका जीसीडी p रेज टू पावर k के साथ 1 नहीं होगा. बताओ बेटा. Of all these numbers 1 2 3 so on up to p1, then p plus 1 p plus 2 so on up to p square, and then p square plus 1 p square plus 2 so on up to p cube. कौन कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं होंगे? Any guess? Okay, let me give you a hint. What about these numbers? What will be the GCD of p and p raised to power k? What will be the GCD of p and p raised to power k? बेटा कितना होगा GCD of p and p raised to power k? Girls, are you able to hear me? Ma'am, p. P. Then what about GCD of p square and p raised to power k? अगर मैं p square लिख दूं तो यहाँ p square आ जाएगा.
So you see वो सारे नंबर्स जो p से डिविजिबल हैं उन सब का GCD p रेज टू पावर k से 1 नहीं होगा. So you see ये जो लास्ट कॉलम है p, p स्क्वायर, p क्यूब, p रेज टू पावर k, इन सारे नंबर्स का GCD आपस में 1 नहीं होगा. They all will not be prime, right? तो ये कितने नंबर्स है टोटल? ये टोटल कितने नंबर्स है? How many numbers are these numbers? p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3, p की पावर k. Right? How many numbers are these? K numbers. K numbers. अच्छा, और अब मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा और कौन कौन से नंबर्स होंगे जिनका GCD p के साथ 1 नहीं होगा? Let me put it in another way. You see, what about these numbers? Let me compile the numbers in this way. What about these numbers? P, 2p, 3p, and so on up to p raised to power k minus 1p. What about these numbers? इन सब numbers का GCD p के साथ 1 होगा या नहीं होगा? All these numbers will have GCD 1 with p or not? No. No, because in सब numbers में p आ रहा है, right? So these numbers does not have GCD 1 with p, and hence with p to the power k. किसी भी power of p के साथ भी इनका GCD 1 नहीं होगा, because p इन numbers को भी divide करता है और p raised to power k को भी divide करता है. And ये कितने number है? How many numbers are these? K numbers. नहीं, not k numbers. कितने numbers है? देखो 1, 2, 3, -1. so on. K minus 1. P raised to power k minus 1 numbers. Yes or no? 1 से शुरू हो रहे हैं. देखो 1, 2, 3. लास्ट नंबर कौन सा है? P raised to power k minus 1. So these are P raised to power k minus 1 numbers. Yes? Yes, ma'am. Right? So total numbers कितने थे 1 से लेके p raised to power k तक? टोटल नंबर कितने थे 1 से लेके p raised to power k तक बेटा? K. नहीं, k नहीं. फिर से सुनो मैं क्या पूछ रही हूँ. I am asking. So total numbers from 1, 2, 3, so on up to p raised to power k. कितने numbers है? p raised to power k नहीं है? 1, 2, 3, so on up to p raised to power k तक कितने numbers है? p raised to power k, और out of which how many numbers were not prime? p raised to power k minus 1 were not prime with p raised to power with which number? They were not prime with p raised to power k. So यहाँ से क्या आ गया? phi of p raised to power k कितना हो जाएगा? So phi of p raised to power k कितना हो जाएगा बेटा? p raised to power k टोटल थे, इनमें से p raised to power k minus 1 प्राइम नहीं है, तो बाकी कितने नंबर बच गए? p raised to power k minus p raised to power k minus 1. बेटा is it clear? बेटा is it fine? Yes, ma'am. So in general, phi of p raised to power k is what? p raised to power k minus p raised to power k minus 1. So you see, अगर मैं phi of p को और simplify करूं, so अगर मैं दोनों तरफ से p raised to power k minus 1 common कर लूं, तो what we left with p minus 1. So p raised to power k minus 1 into p minus 1. Is it fine बच्चे? See total numbers थे p raised to power k, उनमें से p, 2p, 3p, so on up to p k minus 1p. So you see p, 2p, 3p, p raised to power k minus 1p. They are divisible by p. So obviously they will not have GCD 1.
सो कितने नंबर्स बच गए? p raised to power k minus p raised to power k minus 1. So phi of pk is what? p raised to power k minus p raised to power k minus 1. मैंने p raised to power k minus 1 कॉमन लिया था. अगर आप p raised to power k कॉमन ले लोगे तो what you will get? 1 minus 1 by p. बेटा, is it clear to all? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Right? So if I ask you, what is phi of 5 cube? What is phi of 5 cube? Ma'am, 124. Hello? मैम आप म्यूट हो गए हो। मैम हाँ आप जी म्यूट बेटा, हो गए। am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You see phi of 5 cube कितना हो जाएगा? Ma'am, 124. नहीं, not 124. ध्यान से बेटा, 5 cube minus 5 square. Phi of p raised to power k कितना था? 100. p raised to power k minus p raised to power 1 powerless. So this will be 125 minus 25. So this will be 100. Is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? Now, if you see, Article 4 is very important from examination point of view, right? But I'll not do its proof today. I'll do the proof on Monday, right? So for the time being, what this article says, right? Phi is a multiplicative function. Phi is a multiplicative function. So when I'm saying multiplicative function, right? इसका मतलब क्या हुआ? If you have two numbers, say m and n, such that GCD of m and n is 1. दोनों numbers का GCD 1 है. So you see, phi is a multiplicative function. So if you have two numbers m and n जिनका GCD 1 है, then phi of mn, so phi of their product is phi of m into phi of n. Is it fine? Is the definition clear? So multiplicative function का मतलब क्या हुआ? If you have two numbers m and n such that GCD of m and n is 1, so then you will have what? Phi of the product is equal to what? Phi of m into phi of n. Beta, is it clear? Means product को आप break कर सकते हो as phi of m into phi of n. But ये तभी कर सकते हो अगर दोनों numbers का GCD कितना है? 1. 1. Beta, is it clear? Right, so this proof I'm leaving for time being because this will take one lecture, but it is important from examination point of view. So I'll discuss this on Monday, right? So using this, let us move further. So again now, अभी तक हमने किया phi of p कितना था बेटा? What was phi of p? P minus 1. minus 1. So you see, phi of p is p minus 1. अभी तक हमने ये देखा है. फिर हमने देखा है phi of any p to the power k will be what? Phi of k minus p of k minus p of k minus 1. But is it fine? अभी तक हमने ये दो चीजें. Now the third result is, so this is article number 5. So if n greater than 1 is a composite number, so let us see, what if neither this is prime nor this is some power of prime? So it's a composite number. हमें पता है every composite number will have a prime factorization, है ना? याद है, every number can be written as product of primes. So say n is what? p1 to the power l1, p2 to the power l2, so on up to pk to the power lk. All of you will pay attention here. ये सारा हम questions में use करेंगे. Then the question is, what is phi of n? So we have to calculate phi of n in this case, right? So proof is very, very easy. You see, what are these p's?
What are these p's? जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ये pi's क्या होते हैं? Prime numbers. Prime numbers, they are distinct primes. So इनका मतलब इसका मतलब इनका आपस में GCD क्या होगा? 1. 1. Is it fine? Because सारे numbers prime है and they are distinct. Same कोई नहीं होता. So it means they are relatively prime. So obviously अगर number prime है तो उनकी कोई भी power ले लो. So वो सारे भी आपस में क्या होंगे? Prime. 1. Ma'am, prime. They are relatively prime. Very good. अब मुझे क्या निकालना है? Phi of n. मुझे क्या निकालना है? Phi of n. Right. Now you see what is n? N क्या है? P1 L1. हाँ जी बेटा. Any doubt to anybody? Okay. So you see, all these numbers जो phi के अंदर है वो क्या है? They are all prime. और अभी हमने देखा था phi फंक्शन क्या होता है? phi कौन सा फंक्शन होता है बेटा? बेटा is it fine? Phi is a multiplicative function. Yes, ma'am. तो अगर नंबर्स का GCD 1 है तो हम उनको ब्रेक कर सकते हैं. तो phi of n कितना हो गया? So phi of P1 L1, phi of P2 L2, and so on up to phi of PK LK. अब अभी हमने किया था what is phi of P1 to the power L1? What is phi of P1 to the power L1? अभी बताया था क्या था? P1 to the power L P1 minus to L1 minus P1 P1 to L1 minus 1. yes. Then what about this? P2 L2 minus P2 minus P2 L2 minus 1 and so on. Last में क्या आ जाएगा? PK L PK minus L PK L minus 1. राइट. सो या तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो या हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि ये इजी टू रिमेम्बर हो जाए. सो यू सी दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो अगर मैं हर ब्रैकेट में से बड़ी पावर कॉमन ले लूं, 1 L1 कॉमन लिया तो 1 minus 1 by P1 बच गया. ऐसे यहां से अगर सेकंड ब्रैकेट में से P2 L2 लिया तो क्या बच जाएगा बेटा? 1 minus 1 by P2, बिकॉज इधर एक पावर कम है. बेटा क्लियर है सबको? Yes, Yes. ma'am. अगेन PK LK लिया तो 1 minus 1 by PK. So what I did, जितनी P की पावर्स है उनको इकट्ठे कंबाइन कर लो. So you see P1 to the power L1, P2 to the power L2, P2 to the power L2, P3 to the power L3, मैम आपका माइक म्यूट में है. अभी ठीक है बेटा? P2 L2, is it fine? लास्ट में क्या आ जाएगा? PK LK और इधर क्या हो गया? 1 minus 1 by P1, 1 minus 1 by P2 and so on up to 1 minus 1 by PK. So you see ये फर्स्ट नंबर क्या बन गया? ये n नहीं था. n क्या लिया था हमने? P1 to the power L1, P2 to the power L2, PK to the power LK. So you Yes, see n ma'am. into 1 minus 1 by P1, 1 minus 1 by P2 and so on, 1 minus 1 by PK. Is it clear बच्चे? Yes, ma'am. You see phi of n is what? n into नंबर को मल्टीप्लाई करना है 1 minus 1 by P1, 1 minus 1 by P2, so on up to 1 minus 1 by PK. P1, P2 वो सारे प्राइम्स हैं जो n की फैक्टराइजेशन में आते हैं. So you see if I ask you, let us start with a simple number. So n is say 45.
सो पहले आपको n की फैक्टराइजेशन लिखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 45 क्या होता है? 9 5 45, सो 9 इज व्हाट? 3 स्क्वायर इंटू 5। बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. व्हाट इज फाइव ऑफ n, यानी कि 5 ऑफ 45। तो आपकी मर्जी है, या तो आप फैक्टर्स के साथ अलग अलग कर दो या फिर सीधा 45 मल्टीप्लाई बाय। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं? एक तो 3 आ रहा है, तो 1 माइनस 1 बाय 3, और एक कौन सा आ रहा है? 5. 5, 1 minus 1 by 5. So that's it. You can simplify this. So this is what? 45 into, जब आप LCM लोगे, 3 minus 1 is 2 by 3 and 5 minus 1 is 4 by 5. So this is 15, 15 threes are. So answer is 24. Beta, is it clear? Yes. All of you? Ma'am. So in your book, he is proving the result by induction. So induction se bhi bahut easy hai proof, just for 1 minute, right? So we have to prove the result for, so you see, so if n has prime factorization, p1 l1 p2 l2 so on up to pk lk, then phi of n is what? p1 l1 minus p1 l1 minus 1, p2 l2 minus p2 l2 minus 1, and so on, right? And this is nothing but this. So he is applying induction work on k, number of factors. तो अगर k is 1, k is 1, तो k is 1 का मतलब क्या हुआ? एक ही फैक्टर है, so n is p1 l1, n is p1 l1. तो phi of n कितना हो गया? p1 l1 minus p1 l1 minus 1. और अगर l1 हमने कॉमन ले लिया p1 ल1, तो 1 minus 1 by p1, तो यानी कि सिर्फ एक ही नंबर आया है। बेटा क्लियर है? सो n is what? p1 l1 और 1 minus 1 by p1. बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. Right? Now Yes. suppose the result is true for k is equal to m, तो इसका मतलब phi of n m numbers के लिए true है। Now we have to prove the result for m plus 1, right? तो इसका मतलब अब n में m plus 1 प्राइम फैक्टर्स है, p1 p2 pm pm plus 1, बट हमें पता है कि इन सारे नंबर्स का जीसीडी आपस में 1 होगा बिकॉज दे आर प्राइम। सो और हमें पता है कि 5 फंक्शन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, सो देयरफॉर, राइट, phi of p1 l1, अब n कितना है? p1 l1 p2 l2 pm lm pm plus 1 lm plus 1. तो उसने क्या किया? दो पार्ट्स में लगा दिया। सो दिस इज वन पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट। ऑब्वियसली ये सारे प्राइम है, तो इनका सब नंबर्स का आपस में जीसीडी 1 है। सो दिस मींस दिस नंबर एंड दिस नंबर, देयर जीसीडी इज आल्सो 1. सिंस phi इज मल्टीप्लिकेटिव, तो हम ब्रेक कर सकते हैं, तो phi ऑफ दिस नंबर एंड phi ऑफ दिस नंबर। एंड बाय इंडक्शन हमने अज्यूम किया था कि रिजल्ट m के लिए ट्रू है। सो यू सी, इसके लिए रिजल्ट क्या बन गया? p1 l1 minus p1 l1 minus 1, p2 l2 minus p2 l2 minus 1, and so on, pm lm minus pm lm minus 1, और लास्ट के लिए क्या बन गया? pm plus 1 lm plus 1. बाय डेफिनेशन ओनली phi of pm plus 1 कितना होता है? बेटा क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Right? So if you combine all this, you get this result. So choice is yours. Simple induction से भी कर सकते हो, या फिर आप सीधा multiplicative वाली property लगाओ जैसे मैंने लगाई है, and you can get the result. Only thing is you should remember the formula. So let us take this one. So before I stop, let me just. So if you see, this is one small article, article number 6, right? So we'll be done with all. So again, this has come in GNDU as an article. So prove that phi of n is even. Phi of n is even for n greater than 2. Phi of n is even for n greater than 2. Now you see, n is greater than 2. So क्या क्या possibilities हो सकती हैं? So first case is n is some power of 2. So n number ही power of 2 है. बेटा हो सकता है? n कैसा नंबर हो सकता है? n is even number. So obviously n can be of the form 4, n can be 16, n can be 32. हो सकता है ना बेटा? Yes, ma'am. n is solely the power of 2, right? Where t is greater than or equal to 1. Because हमें n is greater than 2 दिया है, तो obviously t has to be greater than 1, right? So you see, then in this case, what is phi of n? What will be phi of n, beta?
2 is prime number. What is phi of p to the power t? Then 2t minus 1. 2 raised to power t minus 2 raised to power t minus 1. बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. Phi of p raised to power k. Phi of this is p raised to power k minus p raised to power k minus 1. So you see, अगर मैं 2 raised to power यहाँ से t minus 1 कॉमन ले लूं, so क्या आ जाएगा? 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. So this is what? 2 raised to power t minus 1. And again t is greater than 1. So you see, answer is always some power of 2. This is power of 2. Yes or no? 2 की कुछ power है. So always even, which is even. बेटा clear है? Yes, ma'am. अब now what is another case? Another case is कि n even तो है but completely 2 की power नहीं है, right? So case 2 will be what? या इससे पहले let us take the consider कि n prime है. So n is greater than 2 and n is prime. N is prime, right? So obviously what will be phi of n? अगर n prime होता है तो phi of n कितना हो जाएगा? N minus 1. n minus 1. Very good. अब बेटा n greater than 2 है और n prime है तो obviously n odd होगा या even होगा? Odd. Odd, Odd. because prime number 2 के बाद सारे odd होते हैं. So it means n minus 1 is even. So therefore phi of n is also even. In this case also phi of n is even. बेटा clear है सबको? हमने केसेस बना लिए. पहला केस हमने लिया कि n is some power of 2 because n is even. Second case हमने ये बना लिया, right? So we had to prove that phi of n is an even integer for n greater than 2. So n is any number which is greater than 2. So first case हमने लिया n is some power of 2. Then okay, we took n is prime, right? Then the third case is n is composite and it's not a complete power of 2. ऐसा भी नहीं है कि वो complete power of 2 है. So complete power of 2. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? What will happen बच्चे? What will be there? What will happen बच्चे? So n is what? 2 raised to power t. कुछ power भी है उसमें और कुछ number पीछे. You see, I'm talking about these kind of numbers. Say n is 18. So n is 18. So you see, this is what? 9 into 2. So यहाँ पे n composite है, but n is not a complete power of 2. So means n is something of this sort. बेटा clear है? Yes, ma'am. तो इसका मतलब यहाँ से phi of n कितना हो गया? Where what is there? What is q is odd. So q में से और 2 common नहीं आ सकता. So बेटा phi of n कितना हो गया यहाँ पे? What will be phi of n? Phi of n will be what? Phi of 2 raised to power t into q. Beta, can you tell me what is the GCD of 2 raised to power t and q? What is the GCD of 2 raised to power t and q? 1. 1. Very good, because q odd है. q में से कोई भी 2 की power और common नहीं आ सकती. So again it is multiplicative. So therefore what is phi of n? Phi of 2 raised to power t into phi of q. So this is what? 2 raised to power t minus 2 raised to power t minus 1. And what is phi of q? Q is prime. Q minus 1. Beta clear hai? Yes, ma'am. Again if you see. Yes, ma'am. This is what? This is 2 raised to power t minus 1 into 2 minus 1 into q minus 1. So I'll quickly complete this. So यहाँ से अगर आप देखो, so this is 2 raised to power t minus 1. So again if you see, this is even into q minus 1. Again q is prime, so q minus 1 is even. So this number is even number. Beta clear hai? And what is last case? What is last case?
that n is not any, I mean n is not odd. ना तो n prime है, so n is composite and n is not even. मतलब n से कोई भी पावर नहीं आ सकती. So again n is what? N will be some prime into q, where GCD of p and q is 1. बेटा is it clear? देखो 15. So 15 ना तो prime है ना तो odd even number है. So n को हम लिख सकते हैं 3 into 5. Again 45. 45 ना तो 2 की पावर है but ना prime है. So this is what? 3 square into 5. So कुछ powers and कुछ primes. Is it clear बेटा? Yes, ma'am. So again, what is phi of n? Phi of p raised to power l into q. Again, these numbers are prime, so this can be broken up, phi raised to power l into phi of q. And by definition, what is this? What is phi of p raised to power l? P raised to power l minus p raised to power l minus 1 into q minus 1. So again, q was odd prime, number was odd, right? So it means what? This number is even. So in any case, phi of n is always, phi of n का आंसर हमेशा क्या आएगा? बेटा हमने क्या Even. even. So अगर आपका आंसर odd आ रहा है, it means you have done something wrong. So this is case number 1, case number 2, case number 3, and I think next case he has taken in the last. जो हमने पहले लिया था, इसने बाद में लिया. Is it fine, बच्चे, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What you can do, you can go through all these articles again, right?